course, and these are the different colleagues from various colleges and university of northern India, Okay. from different discipline. Uh, uh, as per tradition, our participant invite resource person. They give Yes, sir. introduction. Yes, sir. Dr. Yes, Amit, sir. you are requested to invite, sir. Yes, sir. Yeah. Very good afternoon to all of my colleagues. And today we have a renowned resource person, Professor Sir Kumar Jaina. And sir, I, Amit Kumar Kaushik, on the behalf of Director HRDC UGC, Madam Shefali, and our course coordinator, Sir Bhupinder, I invite you for this particular session in our next course, and making this opportunity the best use of this opportunity to introduce you to all my colleagues that are currently undergoing this refresher course. Respected sir, you are presently work at the Department of English at Kshetrabasi Dayanand Anglo Vedic College, Utkal University, Bhubaneswara, and is founder and the president of International Association of Comparative Literature, Society and researcher in arts, design, environment, social science studies. Sir, you are an author, editor, and interdisciplinary researcher, translator, and focus, actor, director, producer, multilingual poet. You taught liberal arts, humanities, social sciences disciplines at universities in Gujarat and Odisha, India. Scholarship from different universities across the globe, and is a renowned editor of international poetry volumes and published 16 book chapters by different publishers like Springer, and 14 research articles. Sir is a scientific member of 13 international research networks across the globe, has delivered 114 seminars and conference papers in India and abroad. Sir has produced for the stage, national radio, and national TV in the India, besides making educational educational documentary and published short stories and poetry in multiple languages in India and USA. Sir, with these words, I kindly invite you to deliver your talk so that we get maximum benefit from your lecture. Welcome you again, sir. Good afternoon to all of you. First of all, I am very much happy to meet so many resource persons from different universities and colleges of northern India. And I just want to tell you, अमित सर, I am म्यूट कर ले आप अपने आप को, अमित सर. yeah. So actually, I took my 10+2 in your state. I did my 10+2 science from Satluj Public School, Panchkula. So I know about Haryana very well. My close friends are from Punjab and Haryana. Then I did my first masters from Guru Nanak Dev University and 1 year French from Guru Nanak Dev University. So I am not new to the Punjab and Haryana. Almost I spent 8 years in that region. I am an interdisciplinary researcher. I am basically from the English literature, but I am not like other English professors who read only literature or language. I worked with the social science, environment, cultural studies, and my MPhil PhD was on tribal studies. And so I thought of, when I was invited, I thought of it is a good opportunity to talk about the tribes of our country. So in these 2 sessions,
I will be taking one session on what is tribe and tribal situation in India at present, and from the colonial time to till present. And in second session, I will have a look into my recent field work in Chhattisgarh. I went Chhattisgarh, so where we can see the sustainability of the tribes of Chhattisgarh. So how sustainability can be, maintained for the tribes of India. So that is a big question, because I feel that our ecosystem is entirely dependent on the tribes of India, whose populations are, going to, place day by day. So let me share a screen, uh, sharing my screen to all of you. Yes. So is it visible, sir? The screen is visible. Yes, sir, visible. Yes, sir. Okay. Very good. So yeah. Thank you so much. This is basically from a presentation in 2021. I have clubbed many presentations together, so that because you are not from literature or not from tribal studies, I don't know how many of you are from the tribal studies, but I will try to make it very clear. So leaving no one behind, indigenous peoples and the call for a new social contract. This is a UNA resolution on World Indigenous Peoples Day in 2021. So why I am showing it? So there will be an authentic document on the indigenous people of India. There are over 476 million indigenous peoples living in 90 countries across the world, according for 6.2% of the global population. Indigenous peoples are the holders of a vast diversity of unique cultures, traditions, language, and knowledge systems. They have a special relationship with their lands and hold diverse concepts of development based on their own worldviews and priorities. This is not I am saying, it is the UN resolution. You can find it in UN website. So I have taken it from UN website. Now coming down to indigenous peoples of the world. Who are indigenous? To whom we can say indigenous? It is not necessary that who are living in the forest, they are only indigenous, but those people who meant all these things, they can be called as indigenous. So indigenous will be very much inclusive, sir. So it will be culture, religion, and spirituality. So if they maintain a unique culture, unique religion, unique spirituality, so they can be called indigenous. Even they, if they have some tradition unique or institution unique, they can be called as also indigenous. And if their knowledge system means how they make medicine, how they make plantation, how they make agriculture, and how they construct a house, and how they give education to their children. If they have their own knowledge system, so they are also called indigenous. And if they are maintaining it at the present, then language and orality, and if they have any specific language or means कुछ बोली भी हो या कुछ भाषा भी हो, like so यदि उनका अपना हो, then if they are a community, and their community are divided into three types. One is living community, means the people, अभी जो लोग वहाँ मतलब बास कर रहे हैं, जो आदमी लोग या जो औरत लोग, जो उनका बच्चे रह रहे हैं वहाँ, फिर उनके कम्युनिटी में उनका एनेस्टर्स भी आते हैं, जो अभी मृत हैं, अभी जो लोग नहीं रहे, वो लोग भी आते हैं उनके कम्युनिटी में. एंड तीसरा है इकोलॉजी. इकोलॉजी के बारे में आपकी जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने एक अच्छा कोर्स रखा है, ये सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर. तो ये सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट जो है, ये इकोलॉजी को लेके ही होता है. इकोलॉजी में आपका फ्लोरा और फोना, मतलब पशु पक्षी आ जाएंगे, फिर आपका जो माउंटेन, झरना, पहाड़, ये सब आ जाएंगे. फिर इकोलॉजी में आपका ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे. इकोलॉजी में जो भी नेचर मेड है, वो सब इकोलॉजी में आ जाएंगे. So that they maintain, and they have their worldview. Worldview means they are unique and diverse kind of. In this worldview, you can find means how they conceive the world. Means उनके हिसाब से दुनिया क्या है, मतलब दुनिया कैसा दिखता है, दुनिया कैसा है, तो वही बात हो जाता है. So on this basis, I can take you because I am not interested to give something theoretical. मैंने जो प्रैक्टिकली जो फील्ड वर्क किया है, मैं उसके ऊपर आपको कुछ बताना चाहता हूँ. जैसे एक बंडा कम्युनिटी है उड़ीसा में. सो ये सबसे आदिम कम्युनिटी माना जाता है,
तो बंडा मीन्स ये अपने आप को रेमो कहते हैं, दे कॉल देम सेल्फ आज रेमो। इनका जो औरत का कपड़ा देख रहे हैं आप, ये लोग मतलब वस्त्र व्यवहार नहीं करते हैं अभी, अभी ये थोड़ा बहुत वस्त्र व्यवहार करने लगे, नहीं तो ये अपने गहने से अपने आप को सजा के रखते हैं। पुरुष हो या महिला हो, ये शरीर में गहना लगाते हैं महिलाएं, और पुरुष जो है एक छोटा सा कौपनी बांधता है, ठीक है। तो महिलाएं पूरे शरीर में, हाथ में, सब जगह में गहना लगा के रखते हैं, और ये अपने आप को ऐसे ही रखते हैं। तो ये लोग बंडा लोग अपने आप को रेमो कहते हैं, बंडा लोग अपने आप को रेमो कहते हैं। और ये रेमो का मतलब होता है मैन, मतलब जो सबसे पहले धरती पे आया। फिर कुछ लोग अपने आप को बंडा परजा भी कहते हैं, ठीक है। बंडा अदर इंडिजिनियस पीपुल्स, नॉन इंडिजिनियस, दिस इज ए बंडा मैन। आप देख सकते हैं, ये अभी का एक फोटो है। तो ये बंडा आदमी है, देखिए ये कपड़ा कैसे पहने हैं, ये अपने शरीर को कैसे ढके हैं, और ये शिकार करके अपना निर्वाह करते हैं। सो आज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, द पॉपुलेशन इज 12,231 मेल एंड 56,569 females, and you know so they are going, day by day they are decreasing. This population is decreasing. And what is their occupation? They are living on shifting cultivation, gathering, hunting, settled cultivation. This is the place in Odisha. You can see this. This is the place. The red part is where the Banda are living. So they have some similarity with other tribes. Their location is in Malkanagiri district. There is a hill. The name of the hill is Konda Kameru Hills Range. Their language is Remo. Remo is a language which is just like Mundari language. And they live in Malkanagiri district in Odisha in India. And anthropologically, they are from Austro-Asiatic linguistic group. Anthropologically, they are from Austro-Asiatic linguistic group. And they use a loincloth. The men use a loincloth to hide their nakedness. That is called gosi. And their women are using a ringa. That is called scot. So women use also brass and aluminum bead necklace and neck rings, etc. And their religion is indigenous religion. And their festivals and rituals are Choit Parav, Push Parav, Patkhanda Jatra, birth, marriage, death rites, etc. Their collective institution, जो हम अपने इंस्टीट्यूशन को पंचायत कहते हैं, तो वो गांव की पंचायत को सिंध बोर कहते हैं, सिंध बोर। एंड उनके जो भगवान रहते हैं, उनको भगवान की जगह को कहते हैं हुंडी। इट इज कॉल्ड एज हुंडी। एंड जहां पर अविवाहित लड़कियां रात में रहते हैं, एक मेस जैसा बना के रहते हैं, तो उसको कहते हैं सैलानी डिंगो। वहां पर आदमियों का जाना मना है। और जिन लड़कियों का शादी नहीं हुआ है, वो रात को पूरे रात सैलानी डिंगो में रहते हैं और सुबह आते हैं, रात भर नाच गाना करते हैं, और अपने वहीं उसी जगह से वो अपना हस्बैंड भी मतलब फाइनलाइज करते हैं, वहीं से उनका शादी हो जाता है। उनके फैमिली इस तरह का है, न्यूक्लियर है और पैट्रिलिनियल है एंड नियो लोकल है। उनके दो तरह के बंडा है, एक अपर बंडा और हिल बंडा, जिसे आप मतलब पहाड़ी के ऊपर देखेंगे, और एक लोअर बंडा भी है। और टोटेमिस्ट की डिवीजन उनका है मोइतेइज, उंटाल, किलो। तो ये अपना टोटेमिक डिवीजन जो है कोबरा और टाइगर से अपने आप को जोड़ते हैं। कम्युनिटी लीडर को नायक कहते हैं, और जो पुजारी है उसको सीसा कहते हैं या पुजारी कहते हैं, और जो मैसेंजर है गांव का उसको बारीक कहते हैं, बारीक या चालान। ये देखिए एक बंडा स्त्री है, ये देखिए इनका जो है कोई कपड़ा नहीं है इनके शरीर में, लेकिन ये पूरे शरीर में गहना इतना पहन रखे हैं कि ये अपने आप को मतलब ढक सकते हैं। बंडा अपना जो क्रिएशन है, उसी क्रिएशन में वो बंडा अपना क्रिएशन, बंडा क्रिएशन आप देखेंगे तो वहां पर आपको सस्टेनेबिलिटी नजर आएगा। सो मैं ये क्रिएशन की स्टोरी इसीलिए लिया कि आप उसे मतलब
सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये ट्राइब्स है अपने आप को इकोलॉजी के साथ कैसे जोड़ के रखते हैं। तो ये अपने जो भगवान का नाम है पाटखंडा महापुरु, ये क्रिएटर ऑफ द रिमो एंड सुप्रीम गॉड हु रिजाइड्स इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूज स्वॉर्ड केप्ट एट द एज ओल्ड banyan ट्री एट मुदलीपड़ा विलेज। इनका सोशल यूनिट को कूडा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लान ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द रेमो व्हिच कंप्राइजेस ए नंबर ऑफ फैमिलीज हु आर बिलीव्ड टू बी डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन अनेस्टर। तो ये कहानी के हिसाब से ये हिंदू, क्रिश्चियन या दूसरे इंडिजिनियस कम्युनिटी जो है गोंड, परिया, भुंजिया और रिमो बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द ह्यूज टोरेंटो अकर्ड इन द बिगनिंग। सो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं। तो आप अभी सस्टेनेबिलिटी का कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जल जो है ये सृष्टि का मतलब प्रथम सोर्स माना जाता है। इट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। सो बंडा भी मानता है कि उनका जो सभ्यता या जो भी उनका सामने आया है वो जल से ही आया है, वो जल से होते ही हुए ही आया है। तो बंडा लोग कहते हैं कि एक बहुत भयंकर बाढ़ आया था जिसमें महादेव ने एक कौवा को जन्म लिया अपनी शरीर से। उनका शरीर से जो स्किन है, स्किन की महिला से वो एक कौवा को जन्म दिए। तो इसके बाद क्या होता है कि कौवा अपना महादेव की कंधे पे बैठ जाता है। महादेव की कंधे पे बैठता है तो महादेव बोलते हैं तुम चारों तरफ देखो। तो वो जब चारों तरफ देखता है तो पानी पानी नजर आता है। पानी पानी जब नजर आता है तो कौवा कहीं उड़ के जा नहीं पाता है। तो महादेव को दया आ जाता है, उन्होंने अपने शरीर से एक बाल निकाल के फिर वो पानी में बहा देते हैं। तो उसके ऊपर बैठ के कौवा फिर मतलब वो एक एक पेड़ बन जाता है, कटन का पेड़ बन जाता है। ये जो सूती हम बनाते हैं उसी का एक पेड़ बन जाता है। तो कौवा खुश हो जाता है और उसका डाली में बैठ जाता है। तो जब उसका डाली में बैठता है तो पानी की तरफ देखता है एंड उसे एक मतलब बहते हुए एक बक्सा मिल जाता है। तो बक्सा वो लेके महादेव के पास आता है। तो बक्सा के अंदर वो लोग को एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं। महादेव के कौवा को कहते हैं तुम कुछ मिट्टी लेके आओ। तो कौवा क्या करता है, मिट्टी नहीं मिलता है तो यार्थवर्म को लेके आता है। यार्थवर्म को जब लेके आता है तो उससे शिव क्या करते हैं, यार्थवर्म के जो उसका मुंह पे जितना मिट्टी है उतना मिट्टी लेके वो अपने नाखून से वो पानी में फेंक देते हैं। तो उससे मतलब धरती बन जाता है। ठीक है, कहानी आगे भी है लेकिन मुझे ये आपको कहना है कि ये कहानी के अंदर मतलब मैं यहाँ पर ये थोड़ा बंद कर देता हूँ। मैं फिर से मतलब बाद में भी प्रेजेंटेशन करूंगा। हेलो, भूपिंदर जी हैं? हेलो, हाँ। तो हाँ दीपक जी, तो ये जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो ये आपको विजिबल था ना? यस सर, Yes, sir. visible था सर, visible। Okay, thank you so much. So because I want to give some example from my field work, I will take it from in the next session. But just I want to tell you that the tribes of India, if we are talking seriously about the sustainability at present, so it is the the responsibility goes back to the tribes of India about the environment, because most of us now are migrating from the rural zone to the new urban area, and not only in Delhi or Delhi NCR or where you are living, or in Haryana or Punjab you have urbanization, but the urbanization movement which came to Haryana, Punjab and Delhi NCR back to 25 years or 30 years, now it is very much high in Odisha or other backward states in our country. So what is happening? So some new industry is entering to our zone, and our zone, which is really the home of the tribes. Means if you remove the forest, if you remove the river, if you remove the mountain, then there is no tribe. Means the tribes of India who are not really Hindu, or the British government make them as Hindu. In the census of 1871, in the census of 1871, for the first time, the British government included the tribes
and they took it as a category of the Hindus. But we know that the tribes are not Hindus. They have their own religion, they have their own language, they have their own medicine, they have their own construction system, irrigation system. They have everything. If you go on a field work to a tribal village or a tribal area, you can find that they are a self-sufficient society. What they took from us, they took only the salt from the coastal area, from the lower range. They always wanted to take the salt. Other than salt, they made everything for themselves. So in that way, like I told you a folk tale. I told you a folk tale, which is really, it's saying that these Banda, who are claiming themselves as the most ancient, category of tribes in India. So their claim is that they are the owner of the forest, they are the owner of the mountain. But what is happening due to this industrialization of the Eastern Ghat or Western Ghat, specifically they are living in the Eastern Ghat. You can understand, they are living in the Eastern Ghat. After the central India, the industrial revolution came to the Eastern Ghat during the period of Nehru. It was ruled then by the Congress, and it is 1950s and 60s. We can find a lot of hydroelectric projects in this area, in the Malkanagiri district in Odisha, where the Bandas are living. But if you see there, whatever I narrated, their folk tale about the origin of the Bandas, So what is happening? The Bandas claim that they are originated from the ecology. Ecology means from the earth, from the water, from the forest, from the mountain. But the question comes now: the tribes of India, who are the owner of the forest and who maintained the ecology of the forest and mountain for a long period, over than 5,000 or 10,000 years. So at present we removed them from their zone. They have no rights to the forest. They have no rights to the jungle. They have no rights to the rivers. The rivers are now giving electricity to us, and the mountains are caught, and industries are built up. Bauxite and manganese and different iron ores are taken from the mountains of the Malkanagiri district. So the without this kind of balancing of the tribal heritage or customs or their knowledge systems, nothing can be saved for the next generation. And more important is they are not their intellectual property, but the physical property. The physical property means I am talking about the existence of the mountains, rivers, and so many living units which are now not seen in that zone. So this is a question to the sustainability of the tribes. And in my next session, I will show that similar cases in Chhattisgarh, but with a different approach. Means in Chhattisgarh now the government is given the forest in the hand of the Gram Sabha. All of us know what is a Gram Sabha because many of us belong to the village. So Gram Sabha means under the Panchayat. So there will be Gram Sabha, and the government has given them the rights to the jungle. And after giving the rights to the jungle, there is a change in the Chhattisgarh, which can be a model for the rest of the country. So my next presentation will be based on that. And I think we take a break as planned earlier. Then we join again after 5 minutes or 10 minutes, whatever. Hello. Sir, yes, sir. Yes, sir. So any questions are now on this? Any questions so which you can discuss? Then we take a small break. Then again we start. We will not disconnect. Yes. Any questions, sir? Any colleague wants to question during this session? After that, we may conclude the session for the coming 10 minutes.
So I think no question, sir. Okay, but may not be many people will be from the environment science or what are the background of the participants? Yes, sir. Yes, Amit ji, Different बताइए. different different background is there. Zoology Okay, से भी हैं, botany से भी हैं, chemistry से भी हैं, yes. economics से भी हैं, political science से भी है, psychology से भी Oh, है. all right, right. Disciplinary. Then okay. Then it's great. So I also can learn from them. Yes, sir. Yes, Please sir. go ahead. Please go ahead, sir. Any query, sir? From any? No query, sir. I think. Okay. Then we meet after. दीपक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अमित जी, yes. या दीपक जी बोलिए, कोई क्वेरी हो नो तो. सर, नो सर, कुछ नहीं. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि वो ये कहानी वगैरह कुछ नहीं रहेगा उसमें, वो प्रैक्टिकल सेशन ज्यादा रहेगा. तो आपको मतलब ये थोड़ा लिटरेचर से भी जुड़ा था, लेकिन मैं उसे थोड़ा इकोलॉजिकली एनालिसिस कर रहा था कि जो फोक टेल उनका हमने कलेक्ट किया है, उनका जो क्रिएशन मिथ उसे कहते हैं, क्रिएशन मिथ. सो वो क्रिएशन मिथ में पाया जाता है कि बंडा मतलब वो अपना ओरिजिन मानता है कि इकोलॉजी से ओरिजिन हुआ है उनका, मिट्टी जो भी है या जो भी है. तो ये एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई, आई मीन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बंडा इज इन हाउ कैन बी मेंटेन्ड इफ यू रिमूव देम फ्रॉम देयर ओरिजिनल जोन. So that original zone must be maintained, and there must be some policy and all. So that will be very well seen in my next presentation, which is based on Chhattisgarh. Thank you so much. We meet after 10 minutes, as sir told. Yeah. Yes, sir. It's 2:42. We may meet at 2:52. Yes, sir. Yes, sir. So colleagues may enjoy their tea, and we will meet after this short break. Okay, sir. 250 पर सर. जी 252.
नमस्कार ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଜିସି ର ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ତ ସେ ଡାକିଲେ ହରିୟାଣା ଯିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ହେଇପାରିବନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଛୁଟି ମିଳିବନି ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଏରେ ହଁ ହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ହରିୟାଣା କ'ଣ ଯିବା ଏବେ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ୟୁଜିସି ରିସର୍ଚ୍ଚର ରିଫ୍ରେସର କୋର୍ସ ଯୋଡ଼େ ସେସନ ଦେଇଛନ୍ତି अरे बाबा गोटे हेल्प करदेव कि तुम पाखे स्मार्टफोन थी ना गोटे फटोटे दीजिए मोर एपटू आसिक एपटू टे नहीं जा साइड भ्यूटा नब देखियो केमती टे भल आसो खरा पड़ो कौटी एडू नौ एडू जा हाँ भल फोन टा धरच केटा 20,000 आसे एटा मु गोटे क्लास नौ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानक कोटा भल लगे ना एटा डिलीट कर दो केते टंका फोन दा दामिका फोन टे नहीं तार तो एते बढ़िया आसी फोटो मो फोटो आसलेनी बोला सेल्फी सेल्फी पाखरा उठेले भल आसे दूर रे भल आसे केसे से के उठेजी तू उठेजू ना ना मो संग अच्छा एटा ठीक आसी किछ असुविधा नहीं किंतु आ गोटे फोटो नबो सुनो ए हाइट रखियो ए गछर टॉप हाइट टाकू कवर करके टिके क्लोज अप ने माने ए डिस्टेंस रखियोनी हैला हां नहीं एठू आसीबो एठू आरंभ करिवो या टॉप जाए टिके क्लोज अप हां कि जदि से गछ फछ गुडा भी आसुथिबो भी भलो माने एपटू नेलो देखिनो
बेटर असला लाईट असला ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆସିଛି ଏଇ ଦିଟାକୁ ପଠେଇ ଦିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୋତେ ମୋ ନମ୍ବରଟା 972544 ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦିଏ କଣ ହେଇଗଲା ସାର୍ 97 ତମ ଅନର୍ସ କଣ ରେ 972544 972544 2544 44 44 ଭୁଲ ଭାଲ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ନମ୍ବର ଟାଇମ୍ ଭୁଲ ଭାଲ 0799 हाँ हाँ अच्छा जीना सर म्यूट कर लीजिए। अच्छा जीना सर म्यूट कर लीजिए, प्रोफेसर जीना। यस यस हाँ थैंक यू क्या हो गया अमित जी? हेलो सर सर माय slide is visible sir Yes, sir. hello okay so should we begin sir नहीं दिख रही सर। दिख नहीं रहा है नहीं दिख रहा सर। okay now sir it is visible नहीं। विजिबल है सर यहाँ पर तो। indigenous people knowledge systems and traditions world view of Kamar tribe of Chhattisgarh so I did स्क्रीन कर दीजिए उसे, तब हो जाए, विजिबल होगा। 1 minute I'm sharing it again हाँ सर, एक्चुअली मोबाइल से कर रहे हैं शायद। जी सर। visible yeah यस। so Yes, sir. yeah actually recently I joined this government institution otherwise under Utkal University earlier I was working in Biju Patnaik University of Technology Odisha so that time I did a field work in Chhattisgarh supported by the tribal department of Chhattisgarh this is some of my introductions like I'm a visiting fellow at Greifswald University also received JAS fellowship at University of Potsdam and also presented my work at University of Manchester and also in Chulankaran University Bangkok and University of Rajshahi and almost all universities in our country. So this objective of this study is to study the ethnicity and indigeneity of the Kamar indigenous community of Chhattisgarh, to find out the oral traditions of the Kamar indigenous community of Chhattisgarh, to find out the uniqueness and diversity of the Kamar indigenous community of Chhattisgarh
within their worldview and material culture. And I have used here comparative and historical methods. And though basically I am using this presentation for the ethnographic traditions, but we will see how the sustainability is more important, the development economy is more important. So the keywords are ethnicity, indigeneity, Kamar tribe, and PBTG. PBTG means particularly vulnerable tribal groups, then development economy and sustainability. The particularly vulnerable tribes in India are 75 in number, and so in Andhra Pradesh and Telangana there will be 12, in Karnataka 2, Kerala 5, Tamil Nadu 6, Bihar and Jharkhand 9, Odisha 13, West Bengal 3, Tripura 1, Manipur 1, Gujarat 5, Maharashtra 3, Rajasthan 1, Uttar Pradesh and Uttarakhand 2, Madhya Pradesh and Chhattisgarh 7, Andaman and Nicobar 5. So these are the very vulnerable indigenous people, tribal people who are going to extinct very soon. So government has given them special attention, but in practice it is not being carried out. So what are the characteristics of the PVTGS? They are homogeneous groups, comparatively small population, geopolitical, cultural, social isolation. These groups, they don't mix up with the mainstream or other groups. They have oral tradition, they have no written language, and traditional knowledge system, non-industrial traditional knowledge system, absence of material culture of the mainstream civilization. Though the vulnerable tribal groups are not using so much mainstream material cultures, but still at present you can see that they are using smartphone, and they are using also the LCD, they are using also the motorcycles. A lot of material culture has gone into their region. Rate of change in socioeconomic indices, their rate of change, if you are from sociology and economics, so you can understand this, their rate of change in socioeconomic indices is very low. And the state government and central government and have some conservation cum development plans, policies based on socioeconomic development indices of the PVTs. Yes. This is the Kamar PVTGS indigenous community which lives in the Gariaband district in Mainpuri. They are also living in Dhamtari district and in Nagri and Magarold and Mahasamund district. Okay, they are living in 3 districts, but my field work was in Nagri. It means Dhamtari district in Chhattisgarh. So their total, the Kamar tribe are having total population 26,530, out of which male are 13,070 and female are 13,460 as per the census of India 2011. See, this is the forest of Nagri. I met this person in the forest of Nagri. He is from the Jabra village. My field work was carried out in the Jabra village in the month of April in 2022. So this is a Kamar tribe person who lives on hunting. They hunt some birds and they are animals and they eat them. Kamar tribes have their origin myth, like the creation myth of the Banda. They feel that they are Baman Dongri in Dev Dongar. So there is a mountain called Baman Dongri. Their name of the god is Baman Dev, and they have 2 subgroups. One is Pahad Patia and another is Bunderjia, means mountain and plain. And their totem is Jagat, Tekam, Markam, Sodi, Marai, Chedia and Kunjam. And their Mukhya, the head of the village, is called as Mukhya. So their gods and goddess are Kachna, Dhruba, Buddhadeva, Thakurdeva, Bamanadeva, Dulhadeva, Badi Mata, Manjli Mata, Choti Mata, Budi Mata, Mother Earth, etc. And hunters, they are hunters and gatherers, hunting of birds and small animals, fishing, collection of tubers and wild produces, and tribal agriculture. And their tribal agriculture is Kodo,
paddy, black gram, green gram, belia, kulathi, etc. And their festivals are Hareli, Pora, Noakhai, Dasera, Diwali, Cherchera, Holi. And they believe on supernatural and witchcraft, black magic, dance, death, marriage rituals, making and selling of soup, blujum, jhampi, etc. from bamboo. Their food is meat of birds and animals, fish, rice, lentils, green grams, black grams, peas, seasonal vegetables, etc. They used to mahua wine, collection and sale of mahua, tendu, salbis, bamboo, chiranji, gum, amla, honey and herbs from forest, etc. Their houses are built up by bamboo, grass thatch, mud, wood and painted by white clay on the wall. Household items are meal, grain storage, bamboo baskets, soups and mats, pottery, cot, pistil bamboo utensil making tools, mulching and weaving clothes, farming tools, matuk, shovel, sickle, axe, etc. As hunters, they possess arrow, bow and fishing net in every household. Hunting tools are arrow, bow, axe and knife. Kamar indigenous community has a Indic language that is called Kamar. Oral traditions, they have their tales, songs, proverbs and myth. This is the Kamar activities. This is the forest of Nagari. When we talk about the sustainability, as I told you, this village, name of the village is Jabra village in forest of Nagari in Dhamatari district, which is about 160 maybe 180 kilometers from the capital of Chhattisgarh, Raipur. And this is the forest where I did the field work. What happens like recently the government of Chhattisgarh has handed over the forest of Chhattisgarh to the tribals, so that the tribals can be the keeper of the forest. They can safeguard the forest and they can utilize the forest to earn their livelihood. So let us see how they are able to see the earn their livelihood. And these are two people. And this is the village of Jabra, where I went for the field work. This is Jabra village, and these are some people in the Jabra village. They are from the Kamar tribe, and this is a Kamar tribe from the Jabra village. This is their Kul Devata, God, indigenous deity of Jabra village. This is a forest medicinal plant. I am just focusing on this. We have gone inside, and you can see that forest medicinal plant, these tribal women are working. This place is full of medicinal plants. So what happens when the rainy season comes, all the medicinal plants which are dried off during the summer, they come up, and these seasonal medicinal plants give a lot of medicinal herbs. So these people, they make soaps, they make some proteins, they make some shampoos, they make so many variety of day-to-day usable things from the forest medicinal plant. So this is carried out by the tribals themselves, and this is the shop. This is the shop where they sell it to the public. So this is the shop. These are two people who helped me during my field work, and I am thankful to them. They are the members of the Department of Tribal Government of Chhattisgarh. So this is the shop where they sell their medicinal products. This is a forest of Jabra, which is famous for tikur. Tikur means I just want to say you this woman is making something from the tikur. Tikur is a medicinal plant, and this is the flower of the tikur. From tikur they make a very costly medicine used for the human beings, and this is mushroom. They found it during the time of rain season. Also, this place they produce a lot of mahua. The place is full of mahua trees, and they produce a lot of mahua. So that is also added to their livelihood. And this is recently they have started ecotourism. So this is a real photograph. This is not an animated photograph. A foreigner who has come to this forest, they are staying in the forest for some day, and they pay some money to the tribals. The tribals provide them
accommodation, food, and all the facilities and vehicles, so that they can move inside the forest. There are a lot of elephants in the forest, but still these people, the tribes, they provide them safe path to the tourists. This is a river where boating is carried out for the ecotourism. The name of the river is Kajal River. And this is a forest rest house. It is made in 1948 or something. I just forget the year of construction. But this is made like a lodge where anyone can come, any government official can come, or any tourist can come who can take permission, and they can stay in the forest rest house. This is the forest of Jabra. And this is Morum Sili Dam Reservoir. It is made during the time of British. And what happens, this Morum Sili Dam Reservoir is made, here, so which gives irrigation facility to this area, so that paddy and other agriculture products can be, cultivated during the time of summer. So people can go for also 3 harvests. I talked to some people that they have 2 harvests of paddy and 1 of vegetables, lentils. So this is, you can say, this is entire fieldwork presentation I did, so that you can conceive an idea that when the forest is back to the tribes of India, so they can take care of the forest, they can be the owner of the forest, they can produce for the forest, they can maintain the ecology of the forest, so that a natural sustainability is created. I mean, whatever sustainability we are creating now from the capital market or from the development projects, they are not natural, they are temporary, and they need a lot of maintenance cost. But at the same time, if the natural sustainability is achieved by the tribes of India, then it will be good for our economy and good for our development, and it can give a socio-economic position, and the tribes' income can increase, their socio-economic slab can go up. And I am giving my acknowledgement to this, the principal of Gandhi Institute for Technology, Department of Tribe, Government of Chhattisgarh, Department of Forest, Government of Chhattisgarh, Tribal Research and Training Institute, Raipur, villagers of Jabra village, Forest Guest House, Jabra and Nagri, escort and staff of Development of Tribe, Government of Chhattisgarh, Director and Additional Director of TRTI, Raipur. Thank you so much. Professor Jina, Yes, sir. this is Dr. Vipul Bhatt. Yes, sir. Yes, sir. आपने अभी छत्तीसगढ़ के बारे में बताया, जी सर, और आपने बताया कि मैं अभी प्रेजेंटली वहीं स्टडी कर रहा हूँ. हाँ, कुछ मैं ओरल ट्रेडिशन स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनका डेवलपमेंट इकोनॉमी के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूँ. हाँ. तो वो लोगों का इकोनॉमी के, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, हाँ जी. मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर इकोनॉमी का कैसे आप देखते हैं. हाँ, मैं इकोनॉमी तो शब्द ही नहीं यूज होता वहाँ. हाँ. एक्चुअली मैं बताया है. हाँ जी. जहाँ उनको दाने के लिए मोहताज है, खाने के लिए उनको मिल नहीं रहा, इकोनॉमी कहाँ से कैसे उनको टच करते? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे साल की 12 महीना होता है. साल की 12 महीना होता है, तो ये ट्राइब जो है अपना जंगल से हर महीना उसे कुछ ना कुछ मिल जाता है. मशरूम मिलता है, कभी महुआ मिलता है. नहीं, आप मेरा बात मेरा अंडरस्टैंड नहीं करा मेरा क्वेश्चन. मेरा कहने का, वो स्वयं के जीवन यापन तो करते हैं, नो डाउट. जीवन यापन के लिए खाना जरूरी है, सब ठीक है, वो कर लेते हैं. इकोनॉमी के से मतलब होता है कि वो कहीं ना ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं. मैं वो बताना चाहता हूँ आपको ना. आपको स्लाइड में दिखा है, आप देखे होंगे एक शॉप का फोटोग्राफ आप देखे स्लाइड में. शॉप का तो देखा. तो उसका सुनिए सर, उसका जो मैनेजिंग करते हैं ना, वो गांव के लोग करते हैं. उसका प्रोडक्शन गांव के लोग करते हैं. उनके गांव को बहुत सारे इनकम आ जाता है उससे, बहुत सारे. मतलब वो फॉरेन में भी भेजते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं. वो चीज वहां के लिए भी खाली नहीं बनाते हैं. मैं भी खरीद के लाया, मैं भी 2000 का सामान लेके आया. बहुत सारी सामान है. देखिए, वो एक जरिया है. फिर इको टूरिज्म जो उनका चल रहा है अभी,
उसके माध्यम से वो लोग बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं। तो वो लोग से मैंने पर्सनली इंटरव्यू लिया, मेरा रिकॉर्डेड इंटरव्यू है उनका। तो उन्होंने क्या बताया कि जब हमको फॉरेस्ट नहीं मिला था तो हमारे पास कोई काम नहीं था, हम दूर दूर तक जाते थे अपना खाने पीने के जुगाड़ करने के लिए, इंडस्ट्री में जाते थे, कहीं भिलाई जाते थे, कहीं जाते थे, तो हमें काम नहीं मिलता था। लेकिन अभी हमारी गांव में इतना काम आ गया कि हम मतलब इंडिपेंडेंट हो गए। तो पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है वो ग्राम सभा का हाथ में है, और फॉरेस्ट से उनका मुझे लगता है यदि कुछ इकोनॉमिक इंडिसेस बना जाए तो जरूर कुछ ग्रोथ होगा, पर हेड कैपिटा इनकम उनका बढ़ा होगा। मतलब मैं वो स्टडी किया नहीं हूँ, लेकिन जरूर बढ़ा होगा। लेकिन मैंने उनको रफ स्टडी किया, एवरेजली वो लोग बताया कि हम यदि एक मतलब जाते हैं किसी का इंडस्ट्री में या कहीं दुकान में काम करने के लिए, हमें इतना मिलता है, लेकिन हम अपना खुद का दुकान कर रहे हैं। और आधे लोग गांव का इको टूरिज्म में जुड़े हुए हैं, आधे लोग गांव का जो है वो अपना उस पे जुड़े हुए हैं, कहा जो मेडिसिनल प्लांट है ना सर, उसमें कम से कम 200 लोग काम कर रहे हैं, आदमी और औरत मिला के। मैं आपके काम की तारीफ वैसे ही कर रहा हूँ जैसे सभी लोग करते हैं। मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी में अपना ट्राइबल पे ही पेपर दिया। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ में विजिट करता रहा हूँ, जी जी जी। ट्राइबल यूनिवर्सिटी में मैंने ट्राइबल पर ही अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके जी जी जी। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब ट्राइबल में क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ बेल्ट एक्चुअली नक्सलाइज्ड बेल्ट है, जहाँ नक्सल इसीलिए 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 गवर्नमेंट ने इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब नक्सल बेल्ट होने के कारण नक्सली इतना अपराध, जबकि पूरी की पूरी कांग्रेस को वहां डब कर दिया था। मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इकोनॉमी की दृष्टिकोण से अभी भी आदिवासियों को बहुत कुछ करना है। नहीं नहीं, बहुत तो करना है, लेकिन ये जो स्टेप लिया छत्तीसगढ़ ने, मतलब गवर्नमेंट ने, हैंडिंग ओवर द फॉरेस्ट टू द ट्राइब्स, ये कोई दूसरा स्टेट में नहीं हुआ है। तो ये वाला है सही सही। हाँ, question is rise on economic development and sustainable development in tribal belt, including Naxal belt. yes sir, yes sir. Yeah. Do you agree So, with me? I'm not really agree with you, because your viewpoint is different and my viewpoint is different. And Yeah. but your question gives me some. I will think about it, and I noted down this thing. I have to add it in my work. I am going next year, I mean in 2023. But Yeah. your question is relevant, sir. Yeah, your question is not a very easy question. It's relevant. At present scenario, it's relevant because Chhattisgarh is fighting with the Naxalism also. That is Yeah. the thing. That is the thing, and that is more important than their sustainability. Their sustainability. Yeah. So I agree to you also on that point. Thank you so much for this input. Thank you so much. मैंने सोचा कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, इतना हम धूप में काम करके आए। सर सभी लोग एक्सपर्ट हैं यहाँ। एक्चुअली होता क्या है सर, जी जी जी। बेसिकली जब आप ट्राइबल यूनिवर्सिटीज, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, आप जाते हो, वो लोग बुलाते हैं, तो बेसिकली कोई भी पेपर पढ़ने जाता है तो वो लोग एक बात कहते हैं कि आप जितना ट्राइबल के बारे में हमको पेपर दे पाएंगे उतना अच्छा होगा। तो हम सर्वे करने के लिए छत्तीसगढ़ बस्तर गए। जी जी जी। और फिर मैंने वहां से एक अपना सर्वे का कलेक्ट करके ट्राइबल यूनिवर्सिटी में पेपर दिया था। बहुत एप्रिशिएट हुआ था वो पेपर, इसीलिए कि मैंने से उसकी रिपोर्ट की थी कि इकोनॉमिक्स की बात पूरी देश करता है, पॉलिसी बनाने वाले करते हैं, सब कमीशन करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली बहुत कम होता है। लेकिन मैं ये जबरा विलेज में देखा कि लोगों से मैंने बात किया, अकेले से भी बात किया, जो लोगों से मिलके अलग अलग से बात किया, तो वो लोग बोले कि सर सच बताएं तो अभी हमारे पास थोड़ा काम आ गया है, क्योंकि हम फॉरेस्ट का जो अधिकार ग्राम सभा को मिल गया, तो गांव का कोई जमीन बेच नहीं सकता। अभी ये रूल कर दिया कि वो जमीन बेच नहीं सकता। तो वो लोग शासन ने पैसा कानून पास किया है, भी पैसा कानून अभी मध्य प्रदेश ने पास किया। जी 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 जी। और मैं आपसे सर, मैं आपसे कोई भी लालच देके किसी भी तरह का कोई भी आदिवासी से जमीन नहीं ले सकता। जी 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 जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर, ऑलवेज। फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। ओके सर, मैं गुरु विश्वविद्यालय हरिद्वार में पोस्टेड हूँ, पर बेसिकली मैं मध्य प्रदेश मेरा नेटिव प्लेस है, तो इसलिए मुझे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का नॉलेज है। जी जी जी। यस। और भी कोई? जी जी।
ये बड़ा ही हेलो। अच्छा स्टेप है सर कि जो हमारी ट्राइब्स हैं जी उनके जी। पास जो मेडिसिनल और नॉलेज है हम्म, तो वो उनकी जमीन उनको हैंडेड ओवर की जाए। मैंने इस पर एक मूवी देखी थी सर, मैं उससे हाँ बड़ी हाँ हाँ आहत हुई थी। हाँ एक मूवी थी इस ट्राइब्स पे, कदम्बन। हाँ जी जी। अगर किसी ने देखी हो तो बड़ा हर्ट हुई थी मैं उसको मूवी को लेके कि आप जबरदस्ती क्यों अर्बनाइज्ड करना चाह रहे हैं हाँ ट्राइब, नहीं चाहिए एक्चुअली। करना चाहते एक्चुअली हैं। मेरा ट्राइबल रिसर्च में उनकी अपनी एक हाँ अपनी नॉलेज है जो हाँ, कि उनका नॉलेज सिस्टम है। लिटरेसी के उनका साथ। उनका सब कुछ है। वो सिर्फ हमारे पास नमक लेने के लिए आते हैं। जी नमक जी नमक लेने के लिए सिर्फ आते हैं वो। जी जैसे सर। मैं उड़ीसा में बताऊं या कोई भी जगह में ट्राइब्स जो है वो हमसे नमक और दूसरा जब धीरे धीरे मेटेरियल कल्चर आया तो केरोसिन लेने लगे। नमक के बाद केरोसिन। लेकिन उसके आगे उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अभी हम जबरदस्ती उन्हें थमा रहे हैं। ये ले जाओ, वो ले जाओ, ये कर लो, वो स्कूल खोल लो। उनका अपना स्कूल है। उनका जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, मतलब उनका जो हॉस्टल है, यूथ हॉस्टल टाइप जो है, डॉर्मिटरी है, उनका डॉर्मिटरी उनका पहला स्कूल होता है। बच्चे बड़े होते हैं तो रात को वहीं रहते हैं, घर में नहीं आते। बॉयज का अलग और गर्ल्स का अलग होता है। तो वहां पर वो सीखते हैं गांव में क्या करना है, आगे मेडिसिन कैसे बनाना है, शिकार कैसे करना है, कपड़ा कैसे मतलब बनाना है। तो उनके पास जब सब कुछ है, हमारी मतलब यदि हम उसको इंडियन ट्रेडिशन या नॉलेज सिस्टम में जोड़ते हैं तो हमारी कितना बड़ा नॉलेज सिस्टम बढ़ जाएगा। लेकिन हम ये तो हमेशा उसको यही है इग्नोर किए। वास्तविक नॉलेज सिस्टम जो हमारे हाँ पुराने समय से चलता आ रहा था कि जो हाँ आवश्यकता है उसको पढ़े। हाँ। जी सर। तो तो मैं कभी ये नहीं मानता कि ट्राइब जो है वो मतलब मार्जिनल है या वो हमारी नॉलेज लेके जिंदा रह सकता है। नहीं, वो उनका इतने सारे, उनका इरिगेशन सिस्टम, उनका मेडिसिनल प्लांट, उनका जो मतलब सारे चीज देखेंगे तो उड़ीसा में हमारा 62 ट्राइब्स है। तो सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितने हैं, नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं, राजस्थान, गुजरात। एक तो बार ये हाँ। तो मतलब ऐसे कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी उनके पास मेडिसिन है। लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है। ये जो मेडिसिनल प्लांट है यहाँ की, गांव की, अभी तो बहुत बुजुर्ग नहीं रहे लेकिन कुछ बुजुर्गों से मेरा बात हुआ तो उन्होंने ऐसे ऐसे दवाई की बात बताए कि हम देखने गए वो सब मतलब जंगल में। फिर वो बोले कि सर ये रेनी सीजन में ही आएगा, अभी ये नहीं मिलेगा आपको। हम जब ढूंढे तो फिर बोले कि सर अभी नहीं आएगा, आपको रियली आना है तो आप रेनी सीजन में आइए तो फिर ये दिख जाएगा। तो ये तो सर, जो हाँ सर, उनके साथ कोलेबरेशन बैठ करके कुछ मेडिसिन को आप कर सकते हैं हाँ किसी, हाँ हाँ, वो आप चाहते हैं तो फिर हो सकता है सर। मतलब हो सकता है। क्योंकि मैं वरना मैं वो तो वो हाँ विद्या या वो ज्ञान लुप्त हो जाएगा। हाँ वही है एक्चुअली। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो ओरल ट्रेडिशन में इससे तो बेसिकली हमें लिटरेचर, लिखना चाहिए ये सब कुछ। हाँ हाँ, मैं लिटरेचर या कल्चरल स्टडी से हूँ। तो मैं, मेरा काम है कहानी कलेक्ट करना। जितनी कहानी अभी मरे जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी यू नो गोइंग टू डाई, तो आई एम कलेक्टिंग दोज फोक टेल्स। लेकिन क्या है, इसके साथ साथ मैं थोड़ा डेवलपमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सब भी पढ़ा हूँ, हिस्ट्री। तो फिर मैं इनका सहारा से कुछ कोशिश करता हूँ कि इसके स्टोरी का आगे क्या है। यदि वो बोल रहे हैं कि यार्थ को मतलब यार्थ फार्म से बनाया, तो क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्यों दूसरा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वो मुझे बहुत मजा आया। दैट बिकम्स इंटरडिसिप्लिनरी। सो मुझे और भी बहुत कुछ लर्न करना है। और मैंने अच्छे अच्छे लोगों के अंडर तालीम भी लिया है। मतलब जैसे डार्विन का ग्रैंडसन है, उड़ीसा में बहुत साल रहे। तो ही इज नो मोर इन उड़ीसा, ही हैज गॉन बैक टू लंदन ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस। मैं उनके डायरेक्ट छात्र, मतलब क्लास में तो नहीं पढ़ा लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जब वो आए तो उन्होंने मुझे कई क्लासेस भी दिया। तो ऐसे लोगों का फील्ड वर्क का तरीका क्या है, विथ कंपासन, विथ सिंपैथी। ऐसा नहीं कि आप एक कॉलोनियल ब्रिटिश माइंड सेटअप लेके गए और ट्राइबल को बोले तुम मार्जिनल हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम मॉडर्न नहीं हो। आप मॉडर्न है आपके हिसाब से, लेकिन ट्राइब भी मॉडर्न है अपने हिसाब से। सर तो ये मानना पड़ेगा सबको। आप जैसा उड़ीसा की तरफ की बात कर रहे हैं, मैं गई तो नहीं हुआ हाँ, लेकिन आइए आइए, मोस्ट वेलकम। हाँ, लेकिन यस। मैं कुछ दिन मेरे हस्बैंड ने वहां काम किया तो वहां के जो नक्सलाइज्ड एरियाज के बारे में भी जो हम बात कर रहे थे हाँ अभी, हाँ वहां हाँ। पर हमारे साथ तो इस तरह का एक्सपीरियंस था कि वो लोग जानबूझकर आपको बिना मतलब कोई परेशान नहीं करते हैं। उनका नहीं जो करेंगे, नहीं करेंगे मैडम, नहीं। आप एक तरह उनके, का आप बैलेंस ऑफ टेरर आप हाँ, आप नक्सल जो क्रिएट हुआ है वो कुछ पॉलिटिकली भी क्रिएट हुआ है। लेकिन क्या है कि वो, उनको पता है कि वो किसके साथ लड़ रहे हैं, तो वो आम लोगों को क्षति नहीं पहुंचाते, इवन छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन ये जो क्रिएट किया गया है ऑल ओवर इंडिया में, नक्सल का जो आइडियोलॉजी है, ये इसीलिए क्रिएट हुआ है मेरा मानना, हिसाब मानने से। मतलब सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के लोग ज्यादा जानते हैं इसके बारे में।
ये एक कंस्ट्रक्शन है मैम। मतलब उनको जैसे उनका जमीन है उनको दे दो, उनका बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए वो लेके कहीं नहीं जा रहे। हाँ देखिए वो क्या है कि एक जैसे हमारा जमीन पे हम गेहूं या धान उगाते हैं तो हम अपने घर ले आते हैं, लेकिन आदिवासी गांव में सब लोग एक साथ धान या जो गेहूं निकालते हैं वो एक साथ गांव में रख के निकालते हैं, फिर घर घर में बांट देते हैं, जमीन नहीं बांटते हैं। समझे आप? उनका जो लैंड सिस्टम है, उनका जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो देखिए। तो मेरा 13 साल का 14 साल का ट्राइबल के ऊपर रिसर्च का अनुभव है। मैं लिटरेचर से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं अभी ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूँ डेवलपमेंट इकोनॉमी और ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, इस पे मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। इकोलॉजी तो मैं, लिटरेचर तो हर कोई करता है, लेकिन मैं लिटरेचर पे इंटरेस्ट जितना भी दे रहा हूँ ये सब में दे रहा हूँ। उनका जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अभी भी है। अभी भी जबरा विलेज में मैं जो गया, ग्राम सभा को जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हैंडओवर किया है, तो वो कहते हैं कि ये पूरे गांव का जमीन है, ये फॉरेस्ट पूरे गांव का है, इको टूरिज्म पूरे गांव का है, मेडिसिनल प्लांट पूरे गांव का है। तो ऐसे यदि ट्राइबल विलेज हो जाएगा सब जगह में, तो उनके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें अपने लिए चिंता करना है कि वो तो सेल्फ सफिशिएंट है। उनका ज्यादा लोभ भी नहीं होता है। उनका जो मानसिकता है वो नहीं कि भोपाल में एक फ्लैट, रायपुर में एक फ्लैट, फिर रोहतक में एक फ्लैट, नोएडा में एक फ्लैट, ऐसे लेने वाले लोग तो नहीं है। वो एक्चुअली जिंदा रहना चाहते हैं। लेकिन उनसे जब आप फॉरेस्ट खींच लिए हैं, आप वहां जिंदाल को भेज दिए, हाँ, आपने वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक, आपको घर को इलेक्ट्रिक चाहिए 500,000 किलोमीटर दूरी में, हाँ, लेकिन उसका प्रोडक्शन होता है ट्राइबल एरिया में। उनके गांव में एक लाइट तक उनको नहीं चाहिए, वो नहीं मांगे आपको, आप जबरदस्त कहीं कुछ बल्ब लगा देते हो। तो ये मैं कोई पॉलिटिकल भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब द फैक्ट इज लाइक दिस। So we have to think about it. As a tribal researcher, I आपकी feel जो भी है सर, आपकी एक बहुत अच्छी विशेषता है, आप सब कुछ कह गए और कह रहे हैं हम ये बात नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया सर। आई एम जस्ट किडिंग, सो प्लीज एंजॉय इट। सर बहुत आपने कह सब कुछ दिया है और कहा कि मैं बोला ट्राइबल्स में ये कल्चर है, इस ये कल्चर से तो डिप्लोमेटिक नहीं कल्चर सीखना अच्छा है। चाहिए। चलिए कभी हम लोग कभी मिलेंगे जरूर। तो ये रिसर्च में रहेंगे तो एक दूसरे से हम जुड़ सकते हैं। आप तो यही आदिवासी हाँ। क्षेत्र छोड़ के कभी गंगा नहाने हरिद्वार आइए सर, यहाँ भी अच्छा अच्छा है सब कुछ। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओवर टू या यू। या Yes, sir. थैंक यू सो मच। या जी, Thank you, sir. Thank Yeah, you, sir, for leading थैंक यू। या such a nice talk. Thank you, sir. You For sharing thank you this so so much much. experience and live experience with us. Yes, yes, yes. That's like Yeah, also yeah, for जल, जंगल और जमीन, yes, जो कि yes. उन्हीं का है, इसलिए ये वो उन्हीं fight का है कर- सर। आप ही ज्यादा कह सकते हैं, आप एनवायरमेंट साइंस से हैं, तो देखिए उनके पास उनका चीज आ जाए तो फिर नक्सलाइट ये वगैरह नहीं रहेगा, मतलब उसका चिंता ही नहीं रहेगा। तो वही है कि मतलब हम लोग भी अधिकार नहीं किए हैं, लेकिन हमने उसको हैंड ओवर कर रहे हैं रिलायंस को, जिंदल को और इसको उसको। तो मतलब ये सोचने वाली बात है। तो वो नहीं करेंगे तो क्या नहीं चलेगा? अब उसके बदल में हम क्या अपना फॉरेस्ट खो रहे हैं, अपना जो इकोलॉजी खो रहे हैं। मतलब ये हम अपना ग्रैंडसन और उनका ग्रैंड ग्रैंडसन को हम क्या देंगे? जिंदल देंगे, रिलायंस देंगे, बिल्डिंग देंगे, सीमेंट देंगे, प्लास्टिक देंगे, हाँ, तो एल्यूमिनियम देंगे, क्या देंगे? मतलब वो बात है, मतलब ये सीरियसली सोचने वाली बात है। आप लोग लिखिए इसके बारे में। हम प्रोफेसर हैं, हम लिख सकते हैं, हमारी स्टूडेंट को इसमें ट्रेन कर सकते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, किसी एग्नेस्ट में नहीं बोल रहे हैं, हम फैक्ट बोल रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। हमको एक सस्टेनेबल एनवायरमेंट चाहिए, जो कि इंडिया में इतने सारे यूनिवर्सिटी है, एनवायरमेंट रिसर्च में सबसे जीरो है इंडिया। मैं जर्मनी गया हूँ, यूके गया हूँ, बैंकॉक, बांग्लादेश, बहुत सारी कंट्री, यूरोप गया हूँ, तो बहुत बार गया हूँ। वो यूनिवर्सिटी में मतलब एनवायरमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा ही खर्चा हो रहा है, बजट में सबसे ज्यादा एनवायरमेंट के ऊपर हो रहा है। हाँ, तो ग्रेप्सवाल्ड जैसे शहर में, बर्लिन में यदि एक नाला बनता है, पहले वो प्रोजेक्ट जाता है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी एक अनाउंसमेंट करके एक पीएचडी कैंडिडेट लेता है, दो पीएचडी कैंडिडेट लेता है, वो शोध करते हैं 2-3 साल। उसके बाद वो नाला होता है, बनाना, मतलब कैनाल बनाना है नहीं बनाना है, उसको क्या करना है, उसके बाद होता है। और हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी का रोल मतलब थीसिस लिख के लाइब्रेरी में रख दिया, बस गया। तो वो नेक्स्ट लेवल को हमें आना है, और हम ही लोग को आना है। नहीं सर, अब 2014 के बाद बहुत तेजी से काम चल रहा है सभी जगह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी, एसडीजी के गोल्स पर भी, और इन्वायरमेंट पर भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। आप देखा होगा इस बार पंजाब ने कम पराली जलाई है। जी जी जी। हाँ, धीरे धीरे इन्वायरमेंट पे बहुत काम शुरू हुआ है, पर
किसी भी चीज की शुरुआत करने में कठिन लगता है, समय लगता है। और उसका रीजन ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जब ठंड में, अभी दिसंबर जनवरी की ठंड में सब लोग बाथरूम में नहाते हैं, गीजर का गर्म पानी भी है, पर पहला मग्गा डालना कितना कठिन है सर, और फिर जी आधी जी जी बाल्टी कम हो जाती पता नहीं चलता। तो शुरुआत जी करना जी कठिन है, शुरुआत हो चुकी है सर। जी 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 सर। वी आर होपफुल। यस If there is any kind of question or query, my colleague may ask to sir. यस यस, प्लीज प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। एनीवन वांट टू कंट्रीब्यूट? क्वेश्चन तो Query. नहीं, मतलब ऐड करना चाहते हैं। मैं भी सीख शरद रहा हूँ ना जी का सर हो आप गया लोगों क्या से। अमित जी? Yes, sir. शरद जी का हो गया सेशन पूरा? जी जी Yes, sir. He has जी सर। finished, sir. सर फिनिश हो गया आपका? जी जी Yes, जी sir. सर जी जी। ओके सर। एक भूपेंद्र सर जोड़ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, Bhupender थैंक यू सो मच। sir, thank you, sir. भूपेंद्र सर जोड़ Thank रहे you. हैं। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर, मैं लॉग आउट करता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Please wait me. थैंक यू सर, नमस्कार सर। वोट ऑफ Thank थैंक्स you, हो sir. गया सर? हाँ यस सर। वोट ऑफ थैंक्स करें, फिर हम आगे देखते हैं। अभी 5 मिनट सर लोग आउट कर लेते हैं, वोट ऑफ ये थैंक्स कर लें, फिर हम करते हैं आगे। जी जी सर, जी सर। वोट ऑफ थैंक्स कर लीजिए सर। Yes, sir. I am going through it. Thank you, sir, for presenting such an informative talk. We come into insight about the life and the tradition, rich tradition, I must say, about the Bonda and the Kamar tribes and their rich traditional culture. And you also presented how they earn their livelihood. It means they do not need outside requirement. They just need some basic requirements. They have their some needs, and that has been fulfilled by the nature itself. यस सर, यस So, सर। and it is also a very informative one, and we eagerly learn and listen you, as it is also evident with the kind of discussion that takes place between you and my colleagues that are currently undergoing. ये हमेशा होता है। मैं जहाँ भी गया हूँ अच्छे लोग बहुत मिलते हैं। मतलब वो उसके बिना मुझे नहीं लगता यदि कोई कुछ नहीं बोलेगा इसका मतलब आपने कुछ नहीं बोला। तो ये सब है, ये दोनों को मैं स्पेशली थैंक्स देता हूँ मेरे तरफ से कि ये पार्टिसिपेट करके मुझे भी कुछ ज्ञान मिला और लगा कि सचमुच हाँ कुछ इफेक्टिव टॉक हुआ। Yes, sir, it was highly effective one, and we come into insight about the tribal community. Thank you, sir. Thank you again. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। यस मैम, यस, थैंक यू सर। हाँ अमित जी, अमित जी, अमित जी। Yes, sir, I am listening.